हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनिंदर सिद्धू और आज हम बात करेंगे अबाउट द वेरी ट्रेजिक एंड सैड डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. ही वॉज हैविंग अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन बॉलीवुड. जो मुकाम उसने हासिल किया था, दैट कुड बी द ड्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. But very strangely, he decided to put a full stop on his rising career and life. And that is very shocking. What is more shocking is that can a person like Sushant Singh Rajput commit suicide? He was full of life. He was so energetic. और उसने जो मूवीज़ की हैं, जो उसने करेक्टर प्ले किए हैं, वो दोज वर सो इंस्पायरिंग करेक्टर्स. वो करेक्टर ऐसे थे कि जो एक दर्द से टूटे हुए इंसान को मजबूत बना के खड़ा करते हैं. His movies, his characters, those were so inspiring, full of life. And such person who has played those characters, who has lived those characters, can commit suicide. It puts a very serious and big question mark on our human mind and human nature. Though suicide is a very mysterious and deep aspect of human nature, but one thing is sure that this decision of committing suicide, it is not taken all of a sudden. It has a long background. It develops gradually. It has its own momentum. And the same thing happened with Sushant Singh Rajput. I came across his one post that he posted on Instagram about a month ago, dedicated to his mother, in which he posted black and white picture of his deceased mother. और उसके नीचे उसने 3-4 लाइंस लिखी हैं. अगर हम उसके शब्दों में छुपे एहसास को देखें, if we can extract his emotional state of mind from those words, then it becomes clear that that poor fellow, he was deep down in depression. He was far away from the contented life. He was far away from the happiness. He was living a frustrated life. But very strangely, no one could understand his words. That is another shocking thing. The lines written on that post are, first line is blurred past, evaporating from teardrops. Second line, unending desires, carving an arc of smile. Third line, but the fleeting life. Fourth line, negotiating between the two. And then he has written word ma. First of all, I try to make a Hindi translation of these lines. The first line is कि धुंधला सा हो रहा अतीत मेरे आंसुओं से भाफ बन के उड़ रहा है. Second line is unending desire, ना खत्म होने वाली इच्छाएं. वो carving a smile, an arc of smile. वो जैसे एक आर्टिस्ट बनाता है ना स्माइल, वैसे बना रहे हैं. थर्ड लाइन, बट द फ्लीटिंग लाइफ, ये लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है. फिफ्थ और फोर्थ लाइन, नेगोशिएटिंग बिटवीन द टू, कि इन दोनों के बीच में समझौता करने की कोशिश हो रही है. Now if we see the lines more closely, first line shows that there are tears in his eyes, and he is so sad that even his past, the past memories, वो भी evaporate हो रही है. Even he is going far away from his past. और नेक्स्ट लाइन में उसमें अपनी conflict of his mind he has depicted it,
कि अनएंडिंग डिज़ायर्स, बहुत इच्छाएं हैं जो एक आर्टिफिशियल आर्क ऑफ स्माइल बना रही हैं. इट इज़ नॉट ए नेचुरल स्माइल, इट्स कार्विंग एन आर्क ऑफ स्माइल. एक आर्टिफिशियल स्माइल उसके आ रही है. एंड नेक्स्ट लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड द फ्लीटिंग लाइफ, बहुत जल्द खत्म होने वाली जिंदगी. And next line is negotiating between the two. Now the word negotiation is a negative. It has negative connotation. It has negative meaning. Because negotiation is always with the enemy. The opposite party से होती है negotiation. And he is negotiating between two. Between two what? One is unending desire and the second is fleeting life. तो इससे लगता है कि that person, he was not only sad, he was not only having tears in his eye, but he had a great unresolved conflict between his unending desires and the shortness of life. अब ये जो lines हैं, they clearly depict hopelessness, conflict, depression, anxiety. Everything is there in these lines. They are not depicting very positive state of mind, but they are depicting very depressive state of mind. Part of his background is that one interview that he gave to DNA after the movie MS Dhoni, in which he stated that after the death of his mother, he couldn't find joy in anything. He even stated that every relation, every activity that is so empty for him. He also stated that he opted for the career of acting, that he was doing the profession of acting, because he wanted to run away from himself. That is a very big problem. First thing, that he could not fill the vacuum, the empty space that was created with the death of his mother. He was so attached with his mother that after her death, he couldn't find the replacement who could give love and care of a mother to him. Now, what can we learn from these things? First of all, come face to face with your own weaknesses, your own realities, your own truthfulness. Come face to face with your true being. Don't avoid your own self. Don't find the escape route of yourself. हमारा खुद का कोई बाईपास नहीं है, ये एक डायरेक्ट रोड है. Second thing is that seek a natural smile, not an artificial smile, not an carved arc of smile, but have a natural smile. मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में कहा था, I quoted one scene from movie Joker, in which that actor, he was trying to spread his lips to get a smile on his face. And don't try to get that smile. Have a very natural, spontaneous smile. And don't depend too much on past. ये अतीत, ये past, ये तो धुंधला होगा ही. It will get blurred sooner or later. There are so much of possibilities in the future. Explore them. Life is full of possibilities. And another thing that is quite philosophical, कि I tell you that ये जो human mind है ना, ये हमारा जो मन है, ये बहुत कुत्ती चीज़ है. Ancient Chinese used to say that human mind is a wild, ferocious monkey, and you never know which way it is going to sit. ये एक पागल बंदर है, इसका कोई मालूम नहीं क्या करेगा. But the Almighty has given us one
thing, that is higher consciousness, जिसे हिंदी में विवेक भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, उस चेतना से, उस विवेक से हम खुद को देखें कि हमारा ये जो जंगली बांदर है ये क्या कर रहा है। हम ग्रेजुअली सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ मत जाएं। ये जो हमारा माइंड है ना, इट हैज़ ग्रेट पावर। ये बंदे को खुदा भी बना सकता है और शैतान भी। तो अपने आप को देखते रहें। एंड ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि दिस लाइफ इज फॉर मोर प्रेशियस देन एनी अदर थिंग, नॉट टू लूज दिस लाइफ। ये जो मैंने पागल बंदर वाली, दिस वाइल्ड फ्रोशियस मॉन्की वाली बात की है, ये इट मे साउंड वेरी स्ट्रेंज टू यू, बट आई टेल यू दैट if we look at the case of Sushant Singh Rajput, क्योंकि ये जो भी कोई अच्छा एक्टर होता है ना, that actor is a good psychologist too, because acting is all about psychology. And if a person like Sushant Singh Rajput can commit suicide, then anything is possible. And Sushant Singh Rajput is not only the one example. Very strangely, the father of modern psychology, Sigmund Freud, he himself was addicted to cigar smoking. He got mouth cancer. 30 surgeries were conducted, but he did not give up that habit of smoking. And you know how this father of modern psychology, he died. He died with consented suicide. He asked his friend and physician to inject poison in his body because he could not bear the trauma, the pain of that cancer. Another example is Ernest Hemingway. He has written novels like Old Man and the Sea. He has created very powerful, strong, inspiring characters. But in the end, he himself committed suicide. So भाई बात यह है कि अपने मन से थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा संभल के रहें। विवेक, चेतना, रीज़न, इसका इस्तेमाल जरूर करें। That is why in every tradition sun is worshipped, because sun is the symbol of light, that awareness, that a kind of awakening. And मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ अवेकनिंग। हम खुद के बारे में जान सके कि हम क्या कर रहे हैं। हम कभी ये सेल्फ हिप्नोटाइज ना हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो। इसके लिए अपना रीज़न, विवेक, चेतना यूज़ करते रहें। बाकी वो आपको बहुत सजेशंस मिल जाएंगी कि ऑलवेज हैव ए गुड वाइब्स, गुड थिंग्स अराउंड यू एंड दिस एंड दैट थिंग, बट मैं फिर कहता हूँ कि अपने माइंड से डर के और संभल के रहें। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो ना हमें होता है, एक थैनाटॉस होता है। थैनाटॉस इज डेथ विश। डेथ विश हमें लगता है कि हम अगर मर जाएंगे तो हमारी शायद बहुत वैल्यू हो जाएगी और आई डोंट नो व्हाट ये, बट इट्स ए डेथ विश, इट कम्स टू आवर माइंड। अगर आप में कभी डेथ विश आए, किसी के भी अगर डेथ विश आए, तो देन प्लीज़ थिंक कि हमें मरने के लिए कोई हरी या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव नो नीड टू डू हरी और एक्स्ट्रा एफर्ट, बिकॉज एवरी वन विल डाई वन डे। मैं भी, सब कोई एक दिन तो मरना ही है, इसलिए जल्दी क्यों करना, एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करना, वाई टू वेस्ट एनर्जी। जो लाइफ में लिए ऐसे फुल्ली स्पेंड करें, खूब जिएं, एंजॉय करो, घूमो फिरो, दुनिया देखो। इतनी खूबसूरत, विशाल, रंग बिरंगी दुनिया है। वाई देयर इज ए हरी टू एंड दिस लाइफ। ये तो ख़त्म हो ही जाएगी, बहुत आराम से होगी,
तकलीफ भी नहीं होगी। वो राजेश खन्ना का एक गाना ना, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। सो इट विल हैपन, डेथ विल हैपन, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, और एक डायलॉग याद आता है मुझे फ्रॉम द मूवी ऑफ अक्षय कुमार, आई थिंक इट इज़ बेबी मूवी। उसमें वेन एवर अक्षय कुमार ही हैड टू गो टू ए मिशन, तो उसकी वाइफ कहती है कि प्लीज़ मरना मत। सो आई वांट टू से कि जब तक वो हमारी जान ना ले ले, वो जान ना निकाल ले, प्लीज़ मरना मत। थैंक यू।